द क्लास एथिक्स एंड वैल्यूज आम ऑलरेडी 13टा क्लास पढ़ी सारी पे आज 14 नंबर क्लास नंबर 14 आज क्लास रे आम पढ़ा यस वुमेन कम्युनिटी एंड सोसाइटी स्त्री गोष्ठी एवं समाज गोष्ठी आ समाज रे स्त्री को को भलिया आमे माने व्यवहार दबा कथा आउ से माने को भलिया व्यवहार पाउचंते you know whatever prestige they should get in society and whatever we are offering to them, this is the thing that we taught inside the class today. ठीक अछि. So next to family, an individual is exposed to the community of which she is a part and then to the larger society. Next to family, परिवार परे an individual is exposed to the community of which she is a part then to larger society. तापर से समाज को जाए परिवार रे प्रथमे से जहाँ पाइबा कथा पाई थाए तापरे समाज आसे आगु को. कम्युनिटी इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी बा गोष्ठी जागु कहूचे ताकू परोक्ष भाव आम समाज भी कहि परिबा. Society in terms of territory and population. In terms of territory and population, community is first comes community, thereafter comes society. Getting me? So next, as an individual grows older, he or she needs increase. His or her needs increase. ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଢ଼ି ଯାଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତାର needs ବି ବଢ଼ି ଯାଏ. And this requires him or her to interact with the community and society. And therefore, because when she grows, she needs to interact with larger section of people, with a large amount of people, with a larger, for the larger interest of our family, etc., etc. Men and women together constitute a community. And men and women together, if we'll talk about the elements of community, then men and women both constitute गठन करती what community गोष्ठी and are members of society and they are also member of society समाज रो जन सदस्य बोल धरा. Their equal participation in the affairs of the community and society is a vital need, and if you want to build a strong society, then their equal distribution or what you can say their participation must be equal. सेमानंकर पार्टिसिपेशन माने अंशग्रहण समाज प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य अंशग्रहण भी समान हवा दरकार. They therefore should benefit equally from the community and society. जहाँ फल समस्ते स्त्री को जेतिकी माने बेनिफिट मिलिबो पुरुष को भी सेतिकी बेनिफिट मिलिबो जदि सेमान को इक्वल स्टेटस दिया जाए. Getting me? And moreover, they should be able to interact with others and move within these spheres, need to have dignity and enjoy resources, having equal access to and control over them. But तो जदि यह हुए ताहेले सेमाने परस्पर सहित म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिकरी परस्पर बुझामणारे समाज को आगू को नहीं जीवे. आउ निज पाखे किसी नियंत्रण समस्त पाखे किसी ना किसी नियंत्रण रहिबो. दे मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर देम. दे मस्ट हैव कंट्रोल ओवर सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बट जदि आम समाज को आम लक्ष्य करिबा इट इज ऑफन सीन दैट द कम्युनिटी कल्चर अंडर एस्टिमेट द पोजिशन ऑफ वुमेन. किंतु आम कम्युनिटी आम सोसाइटी रे स्त्री मानकर जो शक्ति माने जहाँ को आम कहिबा पोजिशन ऑफ वुमेन बा तांकर जो भूमिका को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए केवे भी गुरुत्व दिया जाए नहीं. And undermines it in the larger society, and because in community their prestige is not valued, their dignity is underestimated. That's why the same thing also happen in larger society. जतबले समाज बढ़ी जाए तांकर जो दायराटा बढ़ी जाए से जगह रे भी दे फील नेग्लेक्टेड. से जगह रे भी से माने अवहेलित मने करंती निजको निजे. Dignity and rights in the community and society are often jeopardized. A dignity and rights सब बेले कौन होता है माने गोटे साइड वन साइड पार्शियल होता है.
they encounter violence of different types and especially women they encounter violence of different types ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜର ସେକ୍ଟର ଅଫ ସୋସାଇଟି କୁ ଯାଆନ୍ତି their dignity is undermined by the language used in everyday life and they are denied rights over property their dignity is undervalued ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ undervalued କରାଯାଏ ତାକୁ and also they are denied rights over property rights over property ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ହେବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲା ପଢୁଛ ସେମାନେ 4 ବର୍ଷ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖ ବାବା their male counterparts okay and all these make their participation in the community and society less fulfilling than that of their male counterparts and by this what happens they feel less fulfilling than that of their male counterparts पुरुष तुलनारे स्त्री माने निजकु लेस मने करमती कम भावंती निजकु निजे से माने they often find it difficult to accept the language used against them जो भाषा प्रयोग करा जाए स्त्री मानक प्रति जेतेबेले लार्जर सेक्टर रे सोसाइटी रे से भाषाटा सेमानक पय असह्य होई पड़े against them their lack of rights over property makes them face economic hardship and due to lack of property संपत्तिगत अधिकार रे जेतेबेले फरक आसे पार्शियलिटी माने परिलक्षित हुए सेतेबेले सेमाने इकोनॉमिकली निजको माने सबल मने करमती नाही and in this unit now again we are going to read about those violences that are occurring with women in our society समाज रे होतवा नारी मानक प्रति हिंसा विषय रे स्पेशली हमें वर्तमान ए सब यूनिट पढिबा पई जाउचे so violence against women in public spaces first thing you have to note that this is the first point violence against women in public spaces पब्लिक स्पेस माने सब जगह चलप्रचल होता जगह मानक जो वायलेंस हुए हिंसा हुए से को फॉर्म हिंसा हुए को फॉर्म व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वायलेंस सो कम्युनिटीज एंड सोसाइटी नीड्स टू बी सेफ प्लेसेस फॉर इंडिविजुअल टू लिव इन कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज नीड टू बी सेफ प्लेसेस फॉर इंडिविजुअल टू लिव इन कम्युनिटी और सोसाइटी गोष्ठी एवं समाज को स्त्री एवं पुरुष मान प्रति कौन कह जाए एक निरापद जगह बोली माने मने करा जाता है टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड टू मूव अराउंड परस्पर सहित कथा हवा भावर आदान प्रदान करिबा एंड मूव अराउंड चारिआडे बुलिबा मूव अराउंड बट वेरी ऑफन वी नोटिस वायलेंस इफेक्ट्स पीपल इन दिस स्पेसेस किंतु प्राय सब बेले कौन है पिले आमे नोटिस करी थाउ कि वायलेंस हिंसा देखा देता है नोटिस वायलेंस अफेक्ट्स पीपल इन दोस स्पेसेस बोथ मेन एंड वुमेन fall victim to violence both men and women not only I'm not talking and the book is also not only mentioned about women only केवल स्त्री माने जे वायलेंस माने हिंसार शिकार होइतांते से कथा कह जाय नै पुरुष माने भी बेले बेले हिंसार शिकार होइतांते both men and women fall victim of to violence but comparatively जते बेले तुलना करिबा दुई जनकर ओजन को नबा दुई जनक विषय जते बेले तुलना करिबा violence is directed more against women पुरुष मानक तुलना रे महिला मानकर कंडीशन vulnerable हो जाए दयनीय हो जाए this indicates the unequal status we give our women in our communities and societies and women vulnerability to violence and from this it is very clear that women are more vulnerable in comparison to men पुरुषंक तुलना रे स्त्री माने बेसी दयनीय परिस्थिति रे रही थांते so women in all communities countries and culture country and culture what happens experience violence women in all community प्रत्येक गोष्ठी सेटा हिंदू इते परंते मुसलमान इते परंते क्रिश्चियन इ परंते in all communities प्रत्येक community रे tribe you can take also different tribes also so they experience violence across status groups classes as structure caste position
एंड रिलीजियस अफिलिएशन ये जो जिन सब कहली जमी स्टेटस ग्रुप स्टेटस देखा जाए एक नेक्स्ट हूँ क्लासेस देन हूँ एज स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट एज डिफरेंट क्लास कास्ट पोजिशन एंड रिलीजियस अफिलिएशंस धार्मिक परंपरा जो अच्छे हैं दे फेस वायलेंस वर्चुअली इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ प्रत्येक समाज प्रत्येक पार्ट प्रत्येक अंश प्रत्येक कार्य स्त्री मानू अवहेलित करा जाय थाए रिलीजियस एथनिसिटीज नियो कास्ट ग्रुप नियो जॉब ग्रुप नियो व्हाटएवर यू कैन टेक इन एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी प्रत्येक समाज प्रत्येक अंश प्रत्येक भाग में एमाने कोठी ना कोठी कौनसी ना कौनसी रूप से देखा ही पारे न देखा ही पारे देखा जाई पारे न देखा जाई पारे बट दे आर नेग्लेक्टेड सिमिलरली नो स्पेस एंड नो टाइम इज वायलेंस फ्री फॉर वुमेन नो स्पेस एंड नो टाइम एमती कौन से स्थान नहीं एमसी कौन से समय नहीं जो जगह एमाने वायलेंस रो शिकार ही नहांती सी फेसेस वायलेंस एट होम प्रथमे नवा घर गेटिंग मी फर्स्ट थिंग फेसेस वायलेंस एट होम घरे वायलेंस रो सामना करबा पे पड़े सेकंड थिंग इन द स्कूल रे वायलेंस रो सामना करबा पे पड़े यस इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बस रे टैक्सी रे वायलेंस शिकार हुंते एट वर्क जो कार्य करती से ऑन द स्ट्रीट रास्ता रे गला बेले इन द इंस्टीट्यूशन वेयर शी वर्क्स एंड इन टाइम्स ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट वेयर एवर शी गोस जो भी जाए जो से रुहे कौन सी ना कौन सी प्रकार वायलेंस तार पीछा छाड़े ना द वायलेंस जस्ट स्टिक विथ देम so conflict violence is thus present throughout the life of a woman so like this if we look at those examples those instances that are happening in our society violence never stop following women wherever she goes जो ठीक जाए से तार पीछा छाड़े नहीं not spared she doesn't not spared at all young women so you can say it affects girl children छोटो छोटो झियो माने गर्ल चिल्ड्रेन एडोलसेंट किशोर अवस्था झियो माने यंग वुमेन वयस्क स्त्री माने एडल्ट वुमेन समस्ते इवन एल्डरली वुमेन आर नॉट स्पेयर्ड एपरिक वृद्ध महिला माने भी यही हिंसारू रक्षा पाती नहीं द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस ये वायलेंस रूप विषय जदि आलोचना करबा तार स्वरूप प्रारूप विषय जदि आलोचना करबा फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हाउएवर appear to vary when we adopt a life cycle approach to women's situation in society समाज रे जते बेले हमें वुमेन रो साइकिल देखिबा जेमते हमें छोटा स्टेज जाई के माने जानती समझते जते बेले इन्फेंट थांती देन टिके बड़ ही जानती देन किशोर अवस्था को जानती तापर एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव स्टेज को जानती एल्डरली स्टेज को जानती ये जो स्टेज सब अच्छी ये स्टेज सबू जगार दे आर नेग्लेक्टेड सबू जगार एमाने अवहेलार शिकार ही थामते वी फाइंड दैट वायलेंस इज रूटेड इन द जेंडर इनइक्वालिटी वुमेन फेस थ्रू आउट देयर लाइव्स फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू टू ओल्ड एज एंड why these things is there what is the root of this then the root is gender inequality लिंगगत असमानता एटा होची यार मुख्य कारण एटी जदि प्रश्न उठे why women is neglected in so forms why violence occur in so forms of society why this violence is only meant for women then the question will be there because of gender equality the prevailing gender equality gender discrimination in our custom and tradition कारण आम समाज आम परंपरा रे स्त्री मानू सब बेले निम्न जगार रखा जाइए गेटिंग मी आमे रखुचु रखा तो जाइनी आमे रखुचु ताहले पिले it is a well established fact that violence affects women's general well-being physical as well as mental तो यही सब जिनस को देखले यह स्पष्ट हुए दैट वायलेंस अफेक्ट्स वुमेन वायलेंस ए हिंसाटा स्त्री मान को प्रभावित करी थाए फिजिकली एज वेल एज मेंटली शारीरिक भाव एवं मानसिक भाव ए दुईटा जगह माने दुई प्रकार
से माने कौन करते पिले affected होते getting me mental it prevents women from meaningfully participating in social processes and by this violence by being violated or being tortured by women what happens they are prevented women from meaningfully participating in social process they are staying away themselves they are keeping away themselves from the social process सामाजिक विधि व्यवस्था स्त्री माने दूरेई रहिबा पई पसंद करते यही कारण से माने जोठी की जामती जोठी निजर उपस्थिति जाहिर करती सेठी किछि ना किछि अवहेलार शिकार हवाकू सेमानकू पड़ी थाए and the country at large. It seriously affects their health and productivity. And by these violences, what happens? They are being affected. Their health is being affected. Their productivity is being affected. तो सेमानकर स्वास्थ्य हानि घटे, तांगर कार्य क्षमता भी ह्रास पाई थाए. We have already discussed the violence that is faced by women in the sphere of domesticity. घरे को बड़ा domestic violence ऊपर हम already पढ़ी सारी छे and in the next class we will study how the same affects women in the public sphere local जगह मान करे public space मान करे किभली माने violence रे शिकार होंती से जिनस सब आसंता क्लास रे आसंता कालीठू जो क्लास करिबा हमें सेइतरे गोटे करी पढ़िबा पिले एथरे जेमति रहिला इफ टीजिंग अछि स्टैकिंग रहिछि रेप एंड गैंग रेप्स रहिछि देन कम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस रहिछि এই জিনিস সব আসন্তকালি দেন উইচক্রাফ্ট অ্যাপ্রিহেনশন ইনড্ୟୁসড মর্ডার্স এই জিনিস সব রয়েছে এই সব জিনিস আসন্তকালি পড়িবা সি ইউ দেয়ার আর তো সময় যাইছি থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং স্টে টিউন মাস্টার ইংলিশ বাই বাই